So we are taking the discussion further about the Romer model. See, if you look at Solo model, one thing is true that he has taken up technological change as exogenous, right? So he has understood this that yes, the technology is improving, and but what is determining that technological improvement, that we don't know. So long run growth is due to the technological change, but what is determining that technological change, that we don't know. So that is outside the model, that is exogenously given. What Romer has tried to do, he has tried to endogenize this technological change. So I'll write few points first of all. So if you look at Solo on the one hand, and you look at Romer on the other, then as far as Solo is concerned, right, he is identifying that it is the technological change or technological improvement which is determining the long run. He is identifying that. He is very clear about it, right? But he is not providing any explanation of what is determining this technological change. So as far as long run growth is concerned, is determining or is determined, not determining, is determined by technological change. But the problem is he has not explained what is bringing about this technological change. He has not explained that, right? What is determining technological change? He has not determined that. So, so we say that technological change is something which is exogenous to the model, right? Or you can say long run growth is something which is exogenous to the model. This is what Solo has done. But what Romer has done is that he has picked up this disadvantage of the Solo model and he has tried to explain this. What? So he tries to say that technological change is endogenous. Technological change is endogenous, one thing. He is saying this that yes, Solo has done till this point, he has done completely correct that long run growth is going to be determined by technological change. But what Romer is saying that I'm going one step further. I am trying to explain what is determining this technological change, right? So what he has said is that he accepts he accepts the Solo model result that technological progress is determining the long run growth in output per worker. But the point is that he is trying to tell that what is determining this technological change. So Romer attempts to explain what determines
This technological change, one thing, right? So what is this technology term? So, I mean, he has said this, okay, you look at this kind of production function. So y is equal to, there are labor force which is involved in the production of output y to the power 1 minus alpha, x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha, and so on to xa to the power alpha, let's say, like this. So what is Ly? Ly is the number of workers reducing output y, right? Xi is the different types of capital goods. Different types of capital. तो जो मेन बात यहाँ पे ये है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है वो पूरी की पूरी एग्रीगेट कैपिटल पे नहीं है, बट इंडिविजुअली एक कैपिटल गुड पे है, राइट? दैट इज द मेन डिफरेंस, राइट? सो it is diminishing marginal returns are applied separately to each of the capital good. यहाँ तक लिखिए, note that. Note that diminishing marginal returns applies not to capital as a whole, but separately each of the individual capital good. This is mainly becoming because uh, you have also assumed that 0 is less than alpha is less than. This is what you have assumed. So if this is there, then x1 to the power alpha is there, and you just try to find out what del y by del x1 is. So you will find this, that because alpha is less than 1, so there will be diminishing marginal returns to capital. So what do you have? Del y by del x1, let's say. So this is going to be what? Ly to the power 1 minus alpha into alpha x1 to the power alpha minus 1, right? X1 to the power alpha minus 1. So these are the marginal returns, but diminishing marginal returns, del 2y by del x2. So it is alpha into alpha minus 1, x1 to the power alpha minus 2, ly to the power alpha minus 1 minus alpha. But alpha is lying between 0 to 1. So this guy is going to be positive. This is, these are the marginal returns, right? These are the marginal returns to the marginal returns. These are diminishing marginal returns, the second derivative. And because alpha is less than 1, so this term is going to be negative, which is going to make this entire term to be negative. And that is the reason we have diminishing marginal returns applied separately to each of the capital good, right? So, which you can also write, this thing you can write as Ly to the power 1 minus alpha, summation of I starting from 1 to a, xi, like this, xi to the power alpha, I'm sorry, xi to the power alpha. Now there are two cases.
One case is when A is fixed. A is the technology parameter, right? A is fixed. Other cases when A is not fixed. So it means that is also growth. It means that is also growing. So one, let's look at the first case first. A is fixed. If the technology is fixed. But if technology is fixed and technology is not improving, there are diminishing returns to the capital good. So what do you think will happen? Eventually, the marginal returns are going to fall, and eventually it will taper to zero. तुम्हारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, कैपिटल के जो रिटर्न्स आएंगे वो हर पीरियड में फिर वो कम होते चले जाएंगे ना. एवरी टाइम यू यूज मोर कैपिटल, आई मीन इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज नॉट ग्रोइंग. तो उससे जो रिटर्न्स आएंगे वो कभी ना कभी तो कैपिटल तो डेप्रिशिएट होती रहेगी, खत्म ही होती रहेगी, उससे मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कैपिटल है वो कम ही होते रहेंगे. सो अल्टीमेटली जो चीज ग्रोथ ला सकती थी वो लेके नहीं आ सकती, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ग्रोथ विल टेपर ऑफ. कैसे लिखेंगे? इफ A is fixed, the pattern of diminishing returns of the separate capital good would mean that the growth would eventually taper to zero. Would eventually it will taper off to zero. अब मान लेते हैं कि that A is not fixed. तुम्हारा A भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, तो कुछ वर्कर्स होंगे जो कि इस R&D में लगे होंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव करे. There'll be some workers who will be involved in this kind of research that how technology should be improved. मान लेते हैं कि ऐसे वर्कर्स की जो संख्या है वो LA है. LA is the amount of workers which are engaged in research and development which is going to improve technology, right? उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से नए कैपिटल गुड्स पैदा होंगे, न्यू कैपिटल गुड्स वुड फॉर्म. सो दे आर इन्वॉल्व इन research and development. It will lead to the invention of new capital goods. न्यू कैपिटल गुड्स. तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी देखते हैं तो ए डॉट इज द हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग ओवर टाइम. ए डॉट का मतलब क्या होता है? डीए बाई डी टी. दैट इज गामा एल ए टू द पावर लैम्डा ए टू द पावर 5. अब ये क्या आ गया, राइट?
हाँ, तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। ये ए डॉट तुम्हें नहीं लगता कि दो चीजों पे डिपेंडेंट है? ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जो कि इन्वॉल्व है R&D में, नई कैपिटल गुड्स को इन्वेंट करने के लिए। जो ए डॉट है, ए डॉट इज नथिंग बट, आप कह सकते हो, दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन ए। चेंज इन ए कह दीजिए, दैट इज नथिंग बट DA/DT। ठीक है। तो आप ही कह रहे हैं कि ये जो ए डॉट है ये किस पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, किन चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस सर्च में कि हम नई कैपिटल गुड्स बना पाए, राइट, नई कैपिटल गुड्स बना पाए। एंड ये जो लैम्डा है ना, व्हाट इज दिस लैम्डा, राइट? सो लैम्डा इज द इंडेक्स ऑफ हाउ स्लोली slowly diminishing marginal productivity sets in for researchers। खुद सोचिए आप कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हमेशा नए ही आइडियाज क्रिएट कर पाएंगे, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि उनके आइडियाज में भी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेट होगी ही होगी। दूसरी चीज ए डॉट इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि जो इनिशियल वैल्यू ऑफ ए है वो कितनी है, राइट, प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ ए इटसेल्फ। प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ ए इटसेल्फ। आप खुद सोचिए, आप अगर कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो क्या आपने ही करी है वो नई डिस्कवरी? आप क्या दूसरों के आइडियाज पे डिपेंडेंट नहीं थे? आपने दूसरों के आइडियाज को लिया और एक नए आइडिया को फॉर्म करा। हाँ। न्यूटन ने जब अ, जो अपने लॉस थे, ग्रेविटेशन के लॉस थे, उनके बारे में जब पता करा होगा, हाँ, उनको पता नहीं कितना फायदा मिला होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को उस डिस्कवरी से बहुत फायदा मिला। और न्यूटन ने भी कोई नई चीज नहीं, मतलब उन्होंने भी और लोगों के आइडियाज को पढ़ा होगा एंड देन ही वुड हैव डिस्कवर्ड, ओके ऐसे हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आइडियाज बिल्कुल बिल्कुल वैक्यूम से आ जाएंगे, वो भी प्रिवेलिंग आइडियाज पे ही डिपेंड करेंगे और उसके बाद आप नए आइडियाज को रूप देंगे। इसी को कहते हैं जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट। जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट क्या होता है? जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट, जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट होता है बेटा कि मान लेते हैं आप दूर तक इसलिए देख पा रहे हैं कि आप और लोगों के शोल्डर्स पे खड़े हैं, इसलिए आप दूर तक देख पाते हैं। तो ये कह इस बात को यहां रखने का क्या अर्थ है कि आप उस नए आइडिया को इजाद कर पाए क्योंकि और लोगों ने उन आइडियाज पे काम कर लिया था, उसके बाद आपने उन आइडियाज को रिफाइन करा है। तो जो टेक्नोलॉजी का जो चेंज है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि आज की टेक्नोलॉजी क्या है। अब हम लोग ने स्मार्टफोन देख लिया है, इंटरनेट देख लिया है, अब कुछ और ही आएगा, समथिंग एल्स विल कम, राइट? सो but that will be dependent upon the current state of technology.
वो ये कहते हैं, रोमर कहते हैं कि मान लीजिए कि अ, लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च सेक्टर में कई लोग लगे भी हुए हैं नए आइडियाज को फॉर्म करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर ये इन नए लोगों को आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे पैसे के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में, तो ये क्यों अपना टाइम लगाएंगे नए आइडियाज को सर्च करने में? ये क्यों अपना टाइम लगाएंगे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे, हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन फ्रंटियर आगे की तरफ शिफ्ट करे? ये क्यों लगाएंगे टाइम? राइट। तो रूमर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि रिसर्च सेक्टर गेट्स रिवॉर्डेड विद पेटेंट, पेटेंट्स मिलता है रिसर्च सेक्टर को। ये जो रिसर्च सेक्टर है ना बेटा, this research sector, it gets rewarded. रिसर्च सेक्टर के रिवॉर्ड्स क्या? पेटेंट्स। इन पेटेंट से क्या होगा? इस रिसर्च, इन रिसर्चर्स को मोनोपोली पोजीशन मिलेगी। इस मोनोपोली पोजीशन से क्या होगा? इस मोनोपोली पोजीशन से होगा कि उनको प्रॉफिट मिलेंगे। राइट। सो एंड wages are equated across the sectors ultimately, right? अच्छा, कैसे रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं इस इकोनॉमी में? सो हाउ मेनी पीपल विल बी देयर इन द रिसर्च सेक्टर एंड हाउ मेनी ऑफ देम विल बी देयर इन द आउटपुट, विल बी प्रोड्यूसिंग आउटपुट? बिकॉज कुछ लोग होने चाहिए जो रिसर्च करें, जो नए आइडियाज को इन्वेंट करें, और कुछ लोग होने चाहिए जो उन आइडियाज को यूज करके आउटपुट को प्रोड्यूस करें। दैट्स एन आइडिया, राइट? सो हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन दिस इकोनॉमी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। How resources are allocated in this economy? तो वो ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो हम ये मान रहे हैं अ, कि एक एक फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट है जो कि कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है। पहली बात तो ये, राइट? सो यहां पे भी जो आउटपुट है वो कैपिटल में जाएगा और लेबर में जाएगा। ठीक है। कैपिटल के लिए आप कह सकते हो कि अ कांस्टेंट फ्रैक्शन constant fraction of output is invested in capital। ठीक है। लेबर के लिए कह सकते हो कि कितने लोग, कितने लोग लेबर के रिसर्च के सेक्टर में जाएंगे, how many of them will do research, and how many of them will produce output। तो टोटल लेबर फोर्स मेरी इकोनॉमी में एल है, उस लेबर का कांस्टेंट फ्रैक्शन, एस आर फ्रैक्शन जो है वो रिसर्च में जा रहा है। उस लेबर फोर्स का कांस्टेंट फ्रैक्शन रिसर्च में जा रहा है, और जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वह
आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो रिसर्च में कितने लोग हैं, SR/L। आउटपुट कितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 - SR/L। दिस इज राइट। तो हम अभी तक यहां तक पहुंचे हैं, एंड विल टेक द डिस्कशन फर्दर ऑफ रोम मॉडल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा।